जून बोनांजा सेल आ गया है। अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग, साथ ही साथ 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ करवा देंगे। एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ करवा देंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ बॉस करवा देंगे। यही नहीं, यूजीसी नेट, सीएसआई नेट, बैंकिंग, ईपीएफओ, डिफेंस, एजेई, गेट, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ बॉस करवा देंगे। सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ प्लस 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। 13, 14, 15 जून ओनली। हो जुनून तो सिलेक्शन सून। Hi, good evening, everyone. This is Shefali Singla, and in this session, we are going to talk about minimum cost spanning tree. So, this is one of the application from Greedy Technique, and under this, we'll be talking about two algorithms. One is the Kruskal's algorithm and Prim's algorithm. So, basically, in this session, we will understand that how to find out minimum cost spanning tree, what is minimum cost spanning tree, and if we have two algorithms, what's the difference between these two algorithms. Do we need to cover both the algorithms? Exactly, क्योंकि कई बार question में mention होता है using Kruskal's algorithm, some condition will be given to you. Similarly, with Prim's algorithm, what will be the output? What will be the sequence of the edges which will be used in constructing the minimum cost spanning tree? That means we should be comfortable with both the algorithms, Kruskal's algorithm and the Prim's algorithm. Okay, so we'll start our discussion from the basics. That is, what is a spanning tree? First of all, we know that there are a lot many differences between the trees and the graph. तो जो स्पैनिंग ट्री होता है वो हम एक ग्राफ से कंस्ट्रक्ट करते हैं. ट्री मींस द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ ट्री विल बी इट्स n-1, क्योंकि अगर n-1 से कम एजेस होंगी तो आपके पास ट्री डिस्कनेक्टेड होगा. एंड वी नो दैट ट्री कैन नॉट, रादर आई शुड से ग्राफ विल बी डिस्कनेक्टेड. अगर ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो ट्री नहीं बन सकता, because tree is always connected, whereas graph can be connected or disconnected. Another important point to note here is we can start the algorithm from any vertex, because anyhow we have to include all the vertices in a spanning tree. So basically, spanning tree is nothing but that's the abstraction of the graph. Here we will be taking all the vertices of the graph, okay, but not all the edges, क्योंकि graph में cycles हो सकते हैं, but cycles are not allowed in a tree. Tree में हमेशा root से शुरू करके जब आप leaf node पे जाते हो, to any node there will always be a unique path. More than one path is not possible. So these are few basic differences between trees and graphs. बहुत सारी terms मैं ऐसी use करूंगी जो आप लोगों ने graph theory में cover की होंगी, but I'll not be going into that much depth. I'll be giving you the overview, जो भी terms हम use करते हैं graph में, but I'll not include the concepts of the graph theory. Okay, very good evening प्रशांत. इतना क्लियर है? तो अगर हम डिफाइन करते हैं स्पैनिंग ट्री को, तो स्पैनिंग ट्री इज नथिंग बट दैट इज अ ग्राफ ओनली. सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा? अगर आपके पास n वर्सेस हैं, then there will be n-1 edges, because this is sufficient to get a connected graph. What I'm saying is, if we have two vertices, तो इस ग्राफ को कनेक्ट करने के लिए कितनी एजेस चाहिए? कम से कम 1 edge is required. With 3, if number of vertices are 2, then number of edges required are 1. If we have 3 vertices, 1, 2 and 3, how many edges are required? I want this to be connected graph. This is one edge and other edge could be this one. Obviously हमारे पास ये possibility भी है कि दोनों edges आप यहाँ पे use कर लो, but this is not the case, because here we are getting a disconnected graph and we know that tree is always connected. तो हमें make sure करना है by using n-1 edges, n is equal to 3 here. Number of vertices कितने लिए हमने? 3. और connect करने के लिए कितनी edges चाहिए? 2. Similarly, अगर हम 4 vertices लेते हैं, I'm taking 4 vertices, 4 vertices लिए. अब यहाँ पे अगर आपको इसे connected show करना है, let me call this as A, B,
C and D. A to B, A and B are connected, B to D, आप कैसे भी connect कर सकते हो, and C to D. This is also a tree. Because here I'm using three edges, and I'm getting the graph as the connected graph. So in simple terms, आपके पास n minus 1 edges, हम tree कब बोलेंगे? अब यहाँ पे कोई cycle नहीं है, so obviously this is a tree. When can we call this as a tree? When we are using n minus 1 edges and we are getting a connected graph, then it's a tree. Okay? तो this is known as स्पैनिंग ट्री होगा जब आप किसी भी ग्राफ में से कुछ n माइनस वन एजेस ले रहे हो. आप अपनी मर्जी से कोई एज ऐड नहीं कर रहे हो. जो आपके पास ग्राफ गिवन है, अगर n वर्सेस है तो n माइनस वन एजेस यूज करके आपके पास ट्री बन रहा है. तो बेसिकली ट्री इज नथिंग बट दैट, स्पैनिंग ट्री इज नथिंग बट दैट इज अ सब ग्राफ of the given graph. सब ग्राफ क्यों बोला है? क्योंकि हम ग्राफ के सारे वर्सेस को यूज कर रहे हैं बट सारी एजेस को इंक्लूड नहीं कर रहे. ओके, सो इफ आई डिफाइन the spanning tree, so we can say that a connected subgraph, it should always be connected. Tree है तो it should always be connected. A connected subgraph H, मैं कुछ नाम देती हूँ, सबग्राफ का नाम H है. A connected subgraph H of a graph G is said to be spanning tree. कब बोलेंगे spanning tree? अभी हमने conditions discuss की. Spanning tree if and only if, पहली condition, अगर ग्राफ में आपके पास n वर्सेस है तो नंबर ऑफ एजेस कितने होने चाहिए? n माइनस टू, सॉरी n माइनस वन. अगर 3 है तो 2 है, 2 वर्सेस है तो एक एज है, 4 वर्सेस है तो 3 एजेस आर देयर, सो इट्स n माइनस वन. मेक सेंस? वेरी गुड इवनिंग कंचन. जो भी हमने डिस्कस किया, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. पहली चीज, ग्राफ के सारे वर्सेस होने चाहिए, सो एज शुड कंटेन all the verses. ट्री के अंदर भी आपके पास वर्सेस और एजेस आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने बता दिया कि जो स्पैनिंग ट्री बन रहा है, जो सब ग्राफ है, उसमें जी के वे सारे वर्सेस आने चाहिए. सो इट शुड कंटेन ऑल द वर्सेस ऑफ द ग्राफ जी. पहली कंडीशन. Second condition is on the number of edges. How many edges we have to take? n minus 1. So it should contain n minus 1 edges if graph G contains n verses. कनेक्टेड लिखने की जरूरत है, मैंने ऑलरेडी कनेक्टेड मेंशन कर दिया कि H कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि n माइनस वन एजेस यूज करके अगर आपके पास डिसकनेक्टेड ग्राफ आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज समवेयर अ साइकिल अवेलेबल, एंड इफ साइकिल इज प्रेजेंट इन द ग्राफ, इट कैन नॉट बी अ ट्री. मेक सेंस? इज द डेफिनेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री इज क्लियर? डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज होती है. अगर आप कंप्लीट ग्राफ से स्पैनिंग ट्री फाइंड कर रहे हो, वी हैव द फॉर्मूला. इफ यू आर फाइंडिंग आउट द रूटेड स्पैनिंग ट्रीज, फॉर दैट आल्सो वी हैव द फॉर्मूला. बट इफ अ ग्राफ इज नॉट complete graph, then you will be using Kirchhoff's theorem to determine the number of spanning trees, right? But anyhow, I'm not going into the details of finding the spanning tree because our application is to determine the minimum cost spanning tree. तो हमें सारे spanning trees find करने की जरूरत नहीं है. Using Kruskal's or Prim's algorithm will always be getting a minimum cost spanning tree. Is the definition of spanning tree is clear? This is the common topic because आज वाला topic ही minimum cost spanning tree है. दोनों algorithms में difference आएगा definitely, but the final output for both the algorithms, Kruskal's and Prim's, will be the same. Guys, is there any doubt in the definition of spanning tree?
I hope you remember the formulas, like if we have a complete graph, then number of spanning trees are how much? For a complete graph, number of spanning trees possible. Any idea? Number of spanning trees. This is equal to n raised to power n minus 2. Alright. कोई query नहीं है, इसका मतलब कोई doubt नहीं है. Now next one is minimum cost spanning tree. तो spanning tree term वही है, सिर्फ एक नई term add हुई है यहाँ पे, that is the minimum cost. This means that when we have to construct the spanning tree, इसके लिए हमें graph चाहिए. Spanning tree कहाँ से बनेगा? Graph से. और cost का मतलब होता है edge weights. That means as an input, you will be given with a weighted graph. And from that graph, we will be getting for, let's say we have four vertices, then there are n number of n raised to power 4 minus 4 raised to power 4 minus 2, that is 16 spanning trees are possible. तो उनमें से minimum cost वाला जो spanning tree होगा, we have to return that. That is minimum cost spanning tree. So in order to get minimum cost spanning tree, we are having two algorithms. One is Kruskal's algorithm and other one is Prim's algorithm. Can somebody tell me that what is the difference between Kruskal's algorithm and Prim's algorithm? दोनों में क्या difference है? The major difference is between the construction of the spanning tree. Kruskal's algorithm says that in the middle of the algorithm, you may get a disconnected graph. जब हम spanning tree बना रहे हैं तो algorithm के steps में in the middle of the algorithm, you may get disconnected graph. But definitely at the end of the algorithm, जब आपका process complete हो जाएगा, you will be getting a connected graph only क्योंकि हम spanning tree बना रहे हैं and it is always connected. So the major difference is in Kruskal's algorithm, in the middle of the algorithm, I'll prove it. In the middle of the algorithm, we may get disconnected graph. But at the end, it will always be connected. Whereas in case of Prim's algorithm, we will never get a disconnected graph. We will never get a disconnected graph, not even in the middle of the algorithm. जब आप Prim's algorithm के steps follow कर रहे हो, even in the middle of the algorithm also, you will never get a disconnected graph. Whereas in Kruskal's algorithm, during the construction of the spanning tree, you may get disconnected graph. Now let's have a look over the minimum cost spanning tree using Kruskal's algorithm. Before that, students, those who are new, guys, you can just focus on understanding the concepts. Don't worry about the PDF and the content that I'm writing, because anyhow this will be shared with you in the PDF format in the Telegram group, that is Shefali ma'am Testbook. So you guys can join this group and the link is available in the description box. इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स और क्वेरीज रहते हैं तो आप वो भी टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो. यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मी. बट होता है कई बार मैं रिप्लाई लेट दे पाती हूँ, लाइक आपने मैसेज अभी किया तो अभी यू कैन सी आई एम टेकिंग द लाइव सेशन. तो ड्यूरिंग दिस टाइम, if any student has posted a query,
I won't be able to reply. तो इसलिए कई बार थोड़ा सा time लग जाता है, but definitely you will get the answer for your queries. Okay, you can directly interact with me. You can participate in the quiz and the polls. Link again, this is in the description box. Just go through it and you will get the link. Okay. Now let's consider some graph. मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड करने मतलब हम कॉस्ट की बात करें तो हमें एज कंसिडर करना पड़ेगा. आई एम कंसिडरिंग हियर द एज बिट्स एज 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. जो मैंने बिल्कुल पहला एग्जांपल लिया, दिस इज अ ग्राफ विद डिस्टिंक्ट एज वेट्स. एग्जांपल, वी आर गिवन विद अ ग्राफ विद डिस्टिंक्ट एज वेट्स. कुछ कुछ प्रॉपर्टीज डिराइव करेंगे जो ट्रू और फॉल्स में पूछी जा सकती हैं. ग्राफ विद डिस्टिंक्ट एज वेट्स, इसके बाद हम रिपीटेड भी लेंगे. केस 1, यहाँ पे जितने भी एज वेट्स लिए मैंने वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट लिए. सो क्रुस्कल्स एल्गोरिथम सिंपली सेज दैट, लेट मी टेक द नेम्स ऑफ द वर्ड्स, इट विल बी इजियर फॉर यू. A, B, C, D, E. Okay, now what we need to do is we'll take the minimum edge weight first. You can start the algorithm from any vertex क्योंकि आपको ultimately at the end आपको सारे के सारे vertices चाहिए. So I'm starting it from A. Okay, here I'll be taking the minimum edge weight. Minimum edge weight कितना है इसमें पूरे graph में? This is 10. So I'll be taking the edge. I'll be taking the edge which is having the minimum edge weight. पहली edge include हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी तक ऑब्वियसली एक ही एज है, दो ही वर्सेस है, सो दिस इज कनेक्टेड. नाउ आई वांट द नेक्स्ट मिनिमम एज वेट. एवरी टाइम आई एम टेकिंग द मिनिमम वैल्यू. सो मिनिमम एज कौन सी है? 10 is deleted now. 10 is over. We are left with the edge weights 20, 30, 40, 50 and 60. Again I want the minimum. साथ साथ में complexity भी mind में घुमानी है. Every time we are deleting the minimum value. Which data structure we are using? Because anyhow at the end we have to determine the time complexity as well, right? So next minimum is, every time we are getting the minimum value, this means that we are constructing. Okay ma'am, nahi hai. My question is which data structure we are using. Every time I want the minimum value. Please focus on this word. Every time we are deleting minimum edge weight, हमेशा मिनिमम वैल्यू डिलीट हो, ये कौन इंश्योर करता है? दैट इज द मिनिमम मिन हीप ट्री. मिन हीप ट्री में जब भी आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे, हमेशा रूट नोड डिलीट होगी एंड दैट विल बी रिटर्निंग यू द मिनिमम वैल्यू, राइट? मिन हीप ट्री बनाया हुआ है, किसके बेसिस पे बनाया हुआ है? मिन हीप ट्री के एलिमेंट्स कौन से? दीज आर द एज वेट्स. सो वी आर डिलीटिंग द मिनिमम edge weight. Okay, so next minimum is 20. Now I'll be including 20 here. Cycle form नहीं होना चाहिए. Rest everything is fine. C और D को include करके, is it forming a cycle? No. Now if you see this at step 2, step 1 में हमने क्या किया? We added a edge with a weight 10. In the step 2, we are getting an edge with the weight 20. If you see here in the middle of the algorithm, we are getting a disconnected graph. अभी तक आपका पूरा algorithm खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें कितनी edges add करनी पड़ेंगी? We need to add 4 edges. Reason? Because here we are given with 5 verses, तो कम से कम 4 edges तो चाहिए connected करने के लिए. Correct? So is this point clear? In the, where is it? In the middle of the algorithm, we may, मैंने यहाँ पे may लिखा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा disconnected मिलेगा ही मिलेगा. It depends on the sequence of the, it depends on the arrangement of the edges which is taken in the graph. Okay, मैंने purposefully disconnected बनाने के लिए मैंने 20 opposite side पे लिया. I could have taken that on the left side or right side as well. Okay.
So here we are getting the disconnected graph in the middle. That's fine. Take the next minimum value, that is 30. 30. अगर मैं 30 को add करती हूँ, will it be forming any cycle? कोई cycle नहीं आ रहा, तो I can take this edge 30. Now next one is 40. Can we take 40? अगर हम 40 को include करते हैं तो ये box बंद हो जाएगा. Basically it's forming a cycle. We cannot take 40. Try taking the next minimum. Now we are left with the values 50 and 60. If I'll be taking 50, it is going to form a cycle between A, B, C. So we cannot take 50. Next is 60. 60 is the maximum edge weight. बट वर्स्ट केस सिनेरियो में जब आपके पास कोई और एज इंक्लूड करके स्पैनिंग ट्री नहीं बन पा रहे, तो वर्स्ट केस में वी मे हैव टू इंक्लूड द मैक्सिमम एज वेट इन द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. जरूरी नहीं है कि मिनिमम में हमेशा सिर्फ और सिर्फ 4 मिनिमम वैल्यूज आएंगे. आउट ऑफ दीज 6 वैल्यूज वी हैव टू सेलेक्ट 4 वैल्यूज बिकॉज 5 वर्सेस आर गिवन. 5 वर्सेस है तो 4 एजेस चाहिए, बट वो चारों सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज होगी 10, 20, 30, 40. नो, जो भी आप एजेस इंक्लूड कर रहे हो, जो भी वैल्यूज इंक्लूड कर रहे हो, मेक श्योर इट्स नॉट फॉर्मिंग अ साइकिल. इज दिस क्लियर? तो यहां पे एक नोट सामने आया. इन द वर्स्ट केस, नोट 1, जब आपके पास डिस्टिंक्ट एज वेट्स है तो एक ही स्पैनिंग ट्री बन रहा है. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी कहीं पे हमें कोई चॉइस नहीं मिली. सो नोट 1, if graph is connected with distinct edge weights, then what is the conclusion? Will always get a unique minimum cost spanning tree. Pehla point, we will always get, I guess it's going behind the image. All right. We will always get a unique minimum cost spanning tree. Point number 1. And in the worst case, the maximum edge weight will be included. जब आपके पास कोई चॉइस नहीं बचेगी तो हमें इसे इंक्लूड करना पड़ेगा. So if we determine the time complexity, what will be the time complexity then? अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी बोला है कि हर बार हम मिनिमम वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं. बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज हमने एक मिन हीप ट्री बनाया है सारे एज वेट से, एंड ऑलवेज वी आर डिलीटिंग द मिनिमम एज वेट. Let me see if we have the space. Okay, so here what is the step 1? Step 1 says that take all the edge weights, and construct the min heap. अब min heap और मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए थे. जब कुछ भी नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली जो कम टाइम ले रहे हैं विल बी यूजिंग दैट. सो आई विल बी यूजिंग हियर द बिल्ड हीप मेथड because that's taking less time. This is using build heap method. After that, we will always be deleting the minimum edge weight. Delete the minimum elements. कितने मिनिमम एलिमेंट्स डिलीट करेंगे? बेस्ट केस में जितने वर्सेस हैं उससे एक कम. ओके, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ विद अ सेट ऑफ वर्सेस एंड एजेस वेयर
V is representing the number of verses and E is representing the number of edges. Now, if we are constructing a minimum, we are constructing the min heap with n with all the edge weights. What will be the time complexity? It will be order of E, क्योंकि सारी edges consider करनी है. So this will be order of E. Every time when we are deleting the minimum element, हर बार एक element delete करने के लिए कितना time चाहिए? अगर n elements होते तो हम log n बोलते हैं. यहाँ पे number of elements कितने? Number of elements are E. क्योंकि edge weight से हम graph बना रहे हैं. So it will be taking log E. In order to delete one element, time complexity is order of log n. Yes, so it comes out to be log E. अब ये कितने एलिमेंट्स डिलीट करने? इट डिपेंड्स ऑन द बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस. बेस्ट केस सिनेरियो एंड वर्स्ट केस सिनेरियो. इन बेस्ट केस आपको अगर V वर्सेस है तो V माइनस डिलीट, जो भी आप एज इंक्लूड कर रहे हो, जो भी वैल्यू आप डिलीट कर रहे हो, दैट वाज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम. हम इंक्लूड कर सकते हैं. सो डिलीट V minus 1 edges. इतनी edges आपको delete करनी है. In order to delete one edge, this is taking the time complexity as a log E. So best case में this comes out to be V minus 1 log E. Right? And in the worst case, हो सकता है हमें सारी की सारी edges delete करनी पड़े. Worst case में we may have to delete all edges. So it all edges means E. So it comes out to be E log E. Correct? And we can also write this as, in the worst case, number of edges are equal to V into V minus 1. ये कौन से case में होगा? V minus 1 divided by 2. This is when we have a complete graph. Complete graph means number of edges कितनी होती हैं? N into N minus 1 divided by 2. यही करते हैं. Every vertex, complete graph means every vertex is connected with every other vertex. अगर आपके पास 4 वर्सेस है तो वर्टेक्स 1 कितनों से कनेक्टेड होगा? 3 से. वर्टेक्स 2 कितनों से कनेक्टेड होगा? बाकी की 3 से. वर्टेक्स 3 will be connected with remaining 3. तो basically degree of every vertex is 3. But if you consider the edge, हर एक edge दो बार काउंट हो रही है, 1 to 2 and 2 to 1. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि number of edges in a complete graph are equal to V into V minus 1 divided by 2. So this can also be written as E is equal to approximately V square. और अगर मैं दोनों पे log लगा दूं, if I apply log on both the sides, I'll be getting log E is equal to 2 log V. Constants can be ignored. So we can say that log E is approximately equal to log V. So I can represent this time complexity as omega of V minus 1 को हम V लिख सकते हैं. Log E को I'm writing log V. E, worst case में this is E log V. So this is the time complexity for minimum cost spanning tree. Anyone having any doubt? तो best case में हम कितनी edges delete करेंगे? It will be equal to V minus 1, but worst case में हमें maximum value चाहिए, यानी कि हम worst case में एक एक करके सारी edges को delete करें. Is this clear? Guys, is this point clear? अब हम case consider करते हैं with the repeated edge weights. With repeated edge weights.
I hope that there is no doubt till this point. Next case is when the repeated edge weights are there. Kruskal का काम करने का तरीका वही है, सिर्फ और सिर्फ मैं edge weights different ले रही हूँ यहाँ पे. Let's say this is 2, 3, 4, 5, 5 and 6. How many minimum cost spanning trees are possible? With repeated edge weights, obviously graph में अब connected ही ले रही हूँ, connected है, but with repeated edge weights, let's assume the vertices are A, B, C, D and E. First of all, in the graph, all the vertices will be included. So we'll start from the minimum edge weight. सबसे पहले कौन सा लेंगे? 2, because this is the minimum edge weight. A, B, 2. It's not forming a cycle. Take the next one. Next minimum is 3. So I'm taking 3. Now check, even in the middle of the algorithm, as of now, I haven't got disconnected graph. पहले आपके पास 2 आया, फिर 3 आया. ये middle में भी connected आ रहे. Next minimum is 4. 4 is not forming a cycle. So we can include 4. Next 5. B to D can I take? No, I cannot take B to D. 5 हमारे पास दो values यहाँ पे repeat हो रही हैं. So I'll be taking the next one, that is E. So if you observe here, even in the middle of the algorithm, we didn't got the disconnected graph, and the minimum cost of this spanning tree is 2 plus 3, 5 plus 5, 10 and 14. Minimum cost is nothing but that's the sum of all the edges of the spanning tree. So it comes out to be 2 plus 3 plus 4 plus 5, that is equal to 40. In this case, I didn't got the disconnected graph even in the middle of the algorithm, and I'm getting a unique spanning tree. Is there any other possibility of getting a minimum cost spanning tree from the given graph? जो आपको ये ग्राफ गिवन है, रिपीटेड एज वेट्स है इसमें, बट क्या इस केस में आपको एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री मिल सकता है? नो. सो फॉर दिस वन, पहला पॉइंट हमने जो ऑब्जर्व किया, वी आर नॉट गेटिंग इन दिस केस, we are not getting disconnected graph, not even in the middle of the algorithm. Second point, we are getting a unique minimum cost spanning tree. Correct? Now let's consider one more case with the repeated edge weights only. Okay, it's already there. All right. So I'm taking one more case, A, B, C and D, E. This is in continuation with the previous one. I'm taking the same graph with the repeated edge weights. We were having 2, 3, 4, and I'm just taking the values of the edges. ये लिया था 2, 3, 4, 5, 5 and 6. So I'm taking the same. सिर्फ मैंने दो edge weights को यहाँ पे exchange किए. Now if I'll be constructing a minimum cost spanning tree out of this, then first of all what we need to do is we need to take the minimum edge weight, that is A to B 2, 2 आया, उसके बाद 3 वाली edge आएगी C, then 4 वाली edge 4 D. Next minimum is 5.
दो वैल्यूज के लिए 5 आ रहे हैं, B2E और D2E दोनों साइकिल नहीं बना रहे, यानी कि आपके पास इस केस में दो स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे। लास्ट स्टेप पे चॉइस आ गई A B, everything will be same by the end of third edge. C, this is 3, this is 4, D ये बना। उसके बाद आपके पास चॉइस थी कि आप D2E भी ले सकते थे। If you check here the minimum cost is same for both the trees, but here in this case we are getting two minimum cost spanning trees. Two minimum cost spanning trees का मतलब ये नहीं है कि minimum cost change हो जाएगी. If you see here, the minimum cost remains the same. सिर्फ आपके पास edges में difference आएगा. This was also a case with repeated edge weights. Repeated edge weights. So in simple terms, we can say that if we are given with the repeated edge weights, then we may get more than one minimum cost spanning tree. राइट मे क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले भी रिपीटेड एज वेट्स लिए थे, उसमें एक ही स्पैनिंग ट्री आया था, यहाँ पे दो आ रहे हैं, तो इसका मतलब रिपीटेड एज वेट्स के साथ आपके पास एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री आ सकते हैं, बट दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल दैट इट्स ऑलवेज ट्रू दैट विल बी गेटिंग मोर देन वन मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. Okay, so note 2, another point to note here is with repeated edge weights, more than one minimum cost spanning tree is possible, or in other terms you can say that we may get मैं इसको हाईलाइट कर रही हूं, मेरे को we may get more than one minimum cost spanning tree. Okay, so this is the conclusion. Anyone having any doubt? So here are the important points. Note, in the middle of पहली चीज Kruskal algorithm में, in the middle of the algorithm we may get disconnected graph जिसको हम forest भी बोलते हैं, but at the end of the algorithm we'll surely get a connected graph. Point number 1. Point number 2, for a given graph, एक ग्राफ के लिए एक से ज्यादा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री मे बी पॉसिबल. मे बी पे फोकस करना है, ओके ये मस्ट नहीं है, मे बी पॉसिबल, बट उनकी जो मिनिमम कॉस्ट होगी दैट विल बी द सेम. वी हैव टेकन द एग्जांपल फॉर द सेम. If the given connected graph contains distinct edge weights, अगर सारे के सारे edge weights distinct है, तो जो spanning tree आएगा वो unique होगा. We will get one minimum cost spanning tree. Okay. Anyone having any doubt? Time complexity we have already discussed. तो बेसिकली आपके पास जब हम केसेस की बात करते हैं, ग्राफ कैन बी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड. अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है, ग्राफ कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड हो सकते हैं. अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है, हाउ मेनी मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्रीज आर पॉसिबल? If the graph is disconnected, then zero minimum cost spanning tree. We will be having zero minimum cost spanning tree. If the graph is connected, then we have to check the edge weights. Distinct edge weights and repeated edge weights. If we are having a connected graph with distinct edge weights, then in that case, exactly one minimum cost spanning tree.
तो एक ही स्पैनिंग ट्री आएगा. एंड इफ वी हैव द रिपीटेड एज वेट्स देन may get हर जगह पे मैं may टर्म यूज कर रही हूँ क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है. may get more than more than one minimum cost spanning tree, but the minimum cost of the spanning tree will be unique. Minimum cost of spanning tree will be unique. So this is all about Kruskal's algorithm. Anyone having any doubt? Minimum cost of spanning tree will be unique. So this is all about the Kruskal's algorithm complete summary. So we were getting the time complexity as V log V in the best case, and in the worst case we were getting it as E log V. So this is complete summary of Kruskal's algorithm. If there is no doubt, then let's move on to the Prim's algorithm. We have already discussed that in the Prim's algorithm will never get a disconnected graph even in the middle of the algorithm. Let's see then how this Prim's algorithm is working. But जो final output आएगी using Prim's algorithm and the Kruskal's algorithm, that will be same. Let us assume that this is the graph given to you. Let me provide the names of the vertices. This is A, B, C, D, and E. कुछ edge weight consider कर लेते. Guys, I haven't got the confirmation. Please be fast. See, दो ही चीजें होती है, या तो doubt है या नहीं है. If you have the doubt, quickly write that in the chat section. Otherwise, let's quickly finish the concepts of the Prim's algorithm. All right. I guess there is no doubt. So let's take the edge weights 10, 20. First of all, I'm taking all the edge weights as the distinct one. 40, 50 and 60, 70 and 80. First of all, I'll be constructing a spanning tree using Prim's algorithm just in order to understand the difference. Okay. Using Kruskal's algorithm, how we'll be constructing it? Kruskal's and using Prim's algorithm. Kruskal's ये बोलते हैं हमेशा minimum edge weight को ले लो. तो minimum, first minimum is 10. So I'll be taking A to B. This is 10. Next minimum is 20. Now in the middle of the algorithm, this is the second step. In the middle of the algorithm, I'm getting 20. Yes, we got a disconnected graph in the middle of the algorithm. Next minimum is 30. Rest, you know that how to add the edges. 40 nahi le sakte because it will be forming a cycle. 50 bhi nahi le sakte. It will be forming a cycle between A, C and D. And 60 bhi nahi le sakte kyunki A, B, C mein cycle ban jayega. Next minimum is 70. So yes, we can take 70. So this is the spanning tree. Now using Prim's algorithm, first of all हमने ये बोला है कि सारे के सारे वर्ड्स आएंगे तो आप Prim's algorithm किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको A से स्टार्ट कर रही हूँ. नाउ A is adjacent to A के साथ कौन कौन से हमें हमेशा कनेक्टेड चाहिए. तो A किस किस के साथ कनेक्ट हो सकता है. A can be connected with B, C or D. So what I can do here is दो तरीके. एक तो आप टेबल बना लो एल्गोरिथम वाइज. वी आर हैविंग ए बी सी डी एंड ई. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जिस भी वर्टेक्स को आपने सोर्स वर्टेक्स माना है उसकी वैल्यू 0 ले लो. बाकी सारे के सारे इंफिनिटी क्योंकि अभी तक इन्हें विजिट नहीं किया. नाउ
When you have included A, तो A के साथ जो भी connected है उनके distance को update करो. A से B जा सकते हैं with the value 10. A is deleted. I have included that in the graph. तो आपने पहले A को delete किया, अब A के साथ distance check कर रहे हो. A से B का distance 10 है, A to C का distance 30 है, A to D का distance 50 है. ये सब किसने अपडेट किए? A ने. अगर आपको ये नहीं बनाना है, you can also try it like we have the vertex A to B जा रहा है with 10, A to C जा रहा है with 30, A to D जा रहा है it's with 50. Now check for the available minimum value because minimum cost spanning tree find करना है तो we'll be always picking up the minimum value. That means next vertex जो हम include करेंगे graph में that will be B. B will be deleted. Now include this B in the graph and the edge weight was 10. पहली edge जो add हुई that is 10. Okay. Now update the values, update the distance available from B क्योंकि अब आप कोई भी vertex add कर सकते हो जो B से भी start हो रहे हैं. B से D का distance है 40. B to D is 40. B to C is 60. C अभी तक add नहीं हुआ है 60. B to D, C and E. B to E is 70. Now these options are available. So which one will be taking? और अगर आप tabular form में कर रहे हो B के साथ देखो B to C is 60. Should I update this to 60? नहीं, अगर A से C 30 पे जा रहे हैं तो why would I be taking 60? So I'll not update this. Next one is B to D. B to D is 40. But यहाँ पे कितना दे रहे हैं? It is 50. So I will definitely update this value to 40. क्योंकि D तक पहुंचने के लिए पहले एक ही रास्ता हमने डिस्कवर किया था कि डिस्टेंस 50, अब ये बोल रहे 40 भी पॉसिबल है. B to E सब पहले इट वाज इंफिनिटी, नाउ इट इज 70. 70 इज स्मॉलर. अब जो भी आपके पास वैल्यूज अवेलेबल हैं इनमें से मिनिमम वैल्यू पिक करोगे. मिनिमम इज व्हाट? 30. ये कहां से आया था? दैट वाज A to C. ये किसने अपडेट की हुई है वैल्यू? A ने. सो A to C इज टेकन, दैट इज 30. You get it? That means out of 40, 60, 70, 30 and 50, this is the smaller value and it's not forming a cycle. C is included. अब C के adjacent ऐड कर दो. यहाँ पे C का adjacent है A और B, ये already delete हो चुके हैं. A और B delete हो चुके हैं. तो A और to B, A और B के साथ update नहीं करेंगे. C to D is 20. So I'll be updating this value to D 20. You have deleted C. You have deleted C, so update the values. किसके लिए update करोगे? जो अभी तक vertex exist कर रहे हैं D and E. C to D is 20. 20 is minimum. Yes. To E, this is 70. I'll take the next minimum. Next minimum is for D. ये कहाँ से किसने update किया था? C ने. तो C to D is 20. Now you can see here, even not in the middle of the algorithm, same edges आ रही हैं, but even not in the middle of the algorithm, हमारे पास disconnected graph नहीं आया. सबसे पहले आपने vertex A to B ऐड की, फिर A to C की, फिर C to D की. Right? Now since D is deleted, अब आप check करोगे D to E, what is the cost? That is 80. Should I update this? No. Because 70 is minimum. So next will be deleting B2. ये किसने update किया है? 70. This was updated by B. Right? ये किसने update किया था? This was updated by B. So B to E will be included. तो हम जब भी कोई भी वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं तो एक एंड पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है ग्राफ में और दूसरा एंड पॉइंट हम नया लेके आ रहे हैं. ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो एक वर्टेक्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं, दूसरा नया लेके आते हैं. अगर दोनों एग्जिस्टिंग होंगे, दोनों एंड पॉइंट एग्जिस्टिंग होंगे तो इट विल गिव यू अ साइकिल. मतलब दोनों वर्टेक्स पहले से आ रहे हैं, दोबारा से आपके पास कोई एज आ रही है तो इट विल बी फॉर्मिंग अ साइकिल. राइट?
If you observe, the end result of the Kruskal's algorithm and the Prim's algorithm is same. दोनों ने same minimum cost spanning tree return किए, सिर्फ difference क्या था, Kruskal's में हमें disconnected graph मिला था, Prim's में नहीं मिला. That's it. Is this clear? I'm repeating this point again. When you are starting with the Prim's algorithm, आप किसी भी vertex से start कर सकते हो. You could have started with E as well, क्योंकि anyhow at the end of the result, you will be getting all the vertices in the graph. सारे vertices कौन है? तो इसलिए आप किसी भी vertex को source vertex, starting vertex मान सकते हो. जैसे यहाँ पे मैंने A को माना था. Guys, is this point clear? Because this is the concept of Prim's algorithm. Now I'll be talking about the time complexity. Difference between Kruskal's and Prim's clear? Hurry up. Okay, let's do one practice question and then we'll be going to the time complexity. Is that fine? So I'll be just applying the Prim's algorithm. Now we'll not be talking about Kruskal's algorithm. So you are given with a graph with the, let's say, 6 vertices, 4, 5 and 6. This is connected. Obviously, we need a connected graph, otherwise we won't be able to get the spanning tree. क्योंकि spanning tree लाना है तो आपको connected graph ही होना चाहिए. Now, consider the edge weights 7, 6, 7, 4, 7, 5, 6, 3, 6 and 2. Now I want you guys to construct the Prim's algorithm. That is just to understand the steps. क्योंकि जब steps clear हो गए तो easily we can return the time complexity. Try करना है or should I solve it? Do you guys want to try it? All right. So no response. Let me solve it. So we can start the algorithm from any vertex. So you are given with the vertices 1, 2, 3, 4, 5 and 6. I'm assuming that 1 is the source vertex, starting vertex. So I'll be taking its value as 0, remaining are infinity. So जिसकी भी value minimum है, I'll be taking that. So 1 is the minimum one. So I'll be deleting this and I'll include this in the graph. I'll include this in the graph. Next one. 1 is adjacent to किस साथ adjacent है? 2 के साथ adjacent है with the cost 7, with 3 with the cost 2, with 4 with the cost 6. बाकी सब infinity रहेगा, कोई change नहीं आ रहा. So which one is the minimum value? That is 2. So I'll be deleting this vertex 3. 3 will be deleted and I'll include this in the graph. 3 is included with the edge weight 2. Now 3 is adjacent with every other vertex. 3 is adjacent to 1. 1 हम already include कर चुके हैं, so will not update this. 3 is deleted. I'll not include this. 3 is adjacent to 2 with the weight 6. पहले कितना आ रहा है? 7. So definitely 6 is smaller. 3 is adjacent to 4. Yes, with the weight 6. So will not update this because value is same. So I'm not going to update it. Next one, or you can take 3 is also returning the value 6. Next one is 3 to 5. It's 7. 7 is smaller and 3 to 6 is 5. Take the next minimum value. Next minimum is 5. This is for the vertex 6.
So next vertex जो include होगा graph में, that will be 6. With the weight, ये किसने update किया था? 5. 5 was updated by 3. Okay. अब 6 के adjacents देखो, 6 के adjacents are 4. 4 is not deleted yet, so its value is updated to 3 because 6 to 4 is 3. 6 to 3, 3 is already deleted. 6 to 5, that is 7. 7 is already the same value. Now from the available values are 6, 3 and 7. Minimum is 3. So next vertex that I'll be including is 4. So I'll delete this 4. I'll include this in the graph and I'll get here 3. Now check for the adjacents of 4. 4 is adjacent to 1, that is already deleted. 4 is adjacent to 3, that is also deleted. 4 is adjacent to 6, that is also deleted. Now from the available, it's not going to update any value. Now from the available values, minimum one is what? That is 6. This is for 3 2. This is for 3 2 2. So in the next step, I'll be deleting the vertex that is 2. 3 2 2 is 6 included. Now 2 is adjacent to 1, already deleted. 2 is adjacent to 3, that is also deleted. 2 is adjacent to 5 with the value 4. So 5 is not deleted yet, so it will be updated here. 4. Delete the next minimum. It's just only the 5. Vertex 5 is left out. So we'll take this 5 with the value 4. That's it. So we have got a minimum cost spanning tree and we have not got disconnected in the middle of the algorithm, right? So this is how minimum cost spanning tree algorithm is used. That's the Prim's algorithm on the given graph. अगर आपसे minimum cost पूछी है, then minimum cost will be 2 plus 3 plus 5 plus 6 plus 4. That comes out to be 5 plus 5 is 10 and 10, 20. That's 20. Minimum cost here is 20. Kruskal से भी check करोगे तो भी 20 आएगा. आपके पास unique spanning tree आ रहा है. That is with the cost 20. Clear? So I hope that this is clear to everyone. Let's now talk about the time complexity. So what we have done is for every vertex which is not a source vertex, for every vertex means that belongs to set of vertices. यानी कि हर vertex के लिए हम क्या value assign कर रहे हैं? Minimum value we are assigning as infinity and from the starting vertex, कोई भी vertex को आप starting vertex ले सकते हो. For the starting vertex, we are taking this as 0. Anyhow, आप ग्राफ की जितनी भी vertices है सबको कुछ ना कुछ value assign कर रहे हो. You are initializing it. For each vertex, this is the first step. Initialization. So the first step is taking how much time complexity for each vertex means जितने भी vertices हैं सबको value assign करनी है. So it will be taking order of V. Second step, we are constructing the min heap tree for all the vertices. If you see here, यहाँ पे मैंने जो min heap tree बनाया है, I have included A, B, C, D, E. What are these? These are the vertices. जबकि Kruskal's में हम edges से minimum spanning tree बना रहे थे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the vertices. So we are constructing the min heap tree from the vertices. Min heap tree with the vertices. So what will be the time complexity for constructing the min heap tree? Come on guys. Min heap tree के लिए time complexity क्या होगी? That will be order of n. n represents the number of elements और यहाँ पे number of elements आपके पास vertices हैं. So it will be taking order of V using build heap method. While q is not equal to 5, min heap tree का नाम हमने q दिया है
क्योंकि एक एक करके आपको सारे वर्ड्स ऐड करने। सो वाइल क्यू इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब जब तक मिन हीप ट्री खाली नहीं हो जाता तब तक आपको ये स्टेप्स रिपीट करने। ये कितने बार लूप एग्जीक्यूट होगा? इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स। दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटिंग फॉर v टाइम्स। हर बार क्या कर रहे हैं हम? मिनिमम वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं, राइट? एक्सट्रैक्ट min मीन्स वी आर डिलीटिंग द मिनिमम वैल्यू, डिलीटिंग द min। और एक मिनिमम वैल्यू को डिलीट करने के लिए log n टाइम इज रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ min heap tree are v, so log v time is required for all the adjacents of the deleted vertex। worst case में adjacents कितने होंगे? अब कितने adjacents होंगे? it depends on the best case and the worst case। तो यहाँ पे आपके पास दो केसेस बनेंगे, बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में हम ये बोल सकते हैं एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड विद एवरी अदर वर्टेक्स। तो वर्स्ट केस में एडजेसेंट्स कितने होंगे? इट विल बी v-1। एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड विद एवरी अदर वर्टेक्स एंड इन द बेस्ट केस इट विल बी 1। जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिटर्न कर रहे हैं ऑब्वियसली विल बी रिटर्निंग विद द वर्स्ट केस। फॉर एवरी वर्टेक्स वी हैव टू रिपीट दिस स्टेप। चेक करेंगे कि जो वैल्यू आ रही है इज दैट मिनिमम। अगर मिनिमम वैल्यू आ रही है देन विल अपडेट इट, अदरवाइज विल नॉट अपडेट। यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली लेस देन लिए, दैट्स व्हाई व्हेन वी वर गेटिंग द सेम वैल्यू तो हम वैल्यूज को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो दिस इज अबाउट द थर्ड स्टेप। इनसाइड वी these steps are followed। this is step A, पहले डिलीट किया और उसके बाद हम एडजेसेंट्स की वैल्यू को अपडेट करें। Now, if we have to return the total time complexity will be how much? It is the time complexity taken by the first step. So that's the order of V. Second step, that's order of V. अगर आप यहाँ पे अलग से लिखना चाहते हो, this is 1, this is taking V time, this is 1, तो overall it comes out to be order of V. Order of V plus order of V. This is for the second step. Then for the third step, it's v into, इस लूप के अंदर क्या चल रहा है? फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग log v। नाउ स्टेप b इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस वन, so it's the separate, so it comes out to be v-1। और जब मिनिमम वैल्यू अपडेट होगी तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक द चेंजेस टू द लेवल। जब कोई भी एलिमेंट ऐड करते हो तो आपको ट्री को हिपिफाई करना पड़ता है, सो इट इज log v। Okay, this is under the control of this statement, this is under the control of this statement, so it's order of 1 1 into log v। worst case mein it's v-1। now simplify this, v or v into something, so obviously this function is greater, so here we'll be getting v log v plus, or you can write this as v log v plus v square log v। I'm taking log v common, I'm taking this log v common, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? v plus v square, because this is the maximum term, time complexity will be returned in terms of this function। And what is this v square? We have already discussed that in the worst case number of edges are equal to v into v-1 divided by 2, so in other terms we can say that e is approximately equal to v square, so I can write this as v plus e log v, and this is the time complexity for Prim's algorithm। Guys, is this clear? So this is the time complexity for Prim's algorithm। I hope that the time complexity is clear to everyone, and the difference between Kruskal's and Prim's algorithm is also clear। So we'll be solving the questions in the master class, and I'll show you the different types of questions that have been asked on the basis of Kruskal's algorithm and Prim's algorithm।
तो दोनों में से एक ही प्रिपेयर करना है? नहीं, आपको दोनों ही प्रिपेयर करने हैं। एग्जाम में जनरल मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है और स्पेसिफिकली क्रुस्कल्स एल्गोरिथम या प्रिम्स एल्गोरिथम के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. Okay, so this is all about the minimum cost spanning tree. I'll share this PDF in the Telegram group, that is Shefali ma'am Testbook. और अगर आपको फिर भी कोई डाउट मिलता है रिवाइज करते हुए, वैसे आना नहीं चाहिए क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स, तो इट शुड बी क्लियर. बट स्टिल अगर डाउट आता है यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द टेलीग्राम ग्रुप, और आप नॉर्मल डायरेक्टली भी इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, और you can participate in the quiz and the polls. If you want to cover the whole concepts in detail, then currently the June Bonanza sale is going on. Today is the last date for the same. इस सेल में बेनिफिट क्या मिल रहा है? एक तो जो प्राइस है दैट इज द रिड्यूस्ड प्राइस. ओके, दिस इज द प्राइस फॉर 1 ईयर. बेसिकली आप पूरा 1 ईयर के लिए पे नहीं कर रहे हो सेल के अंदर, यू आर पेइंग फॉर जस्ट 9 मंथ्स, और इसके साथ आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है. और ये बेनिफिट कब मिलेगा? व्हेन यू विल बी यूजिंग द कोड Shefali S. Okay, so if you want to follow this, then let me share my screen और मैं आपको दिखा देती हूँ कि लिंक कैसे एक्सेस करना है आपको. So I'm going to share my screen with you guys. I hope my screen is visible to everyone. So when you go to the description, यहाँ पे पहली सीरीज आपको गिवन है दैट इज फॉर द मास्टर क्लास. तो आप इस लिंक को फॉलो करके मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो. मास्टर क्लास रोज शाम को 8 बजे होती है, आधे घंटे की होती है. जो भी क्वेश्चंस हम जो भी कॉन्सेप्ट्स हम यूट्यूब सेशन पे कवर करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हम मास्टर क्लास में करते हैं. ओके, जो लोग एनआईसी सुपर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक दिस इज द सेकंड लिंक टू ज्वाइन दैट. एंड फॉर सुपर कोचिंग गेट दैट इज द फोर्थ लिंक. जो ये थर्ड लिंक है, अगर आप थर्ड लिंक देखते हो, दिस इज द लिंक वेयर it will take you to the telegram. So this is join gate super coaching telegram. तो ये telegram group का link है. You can follow this link and you can join the telegram. Now, if you want to get the subscription either for the NIC or for Gate, anything, you can use this coupon code to get the maximum benefits, that is SHEFLIS. Now, let me quickly take you to the super coaching so that you get to know that what all benefits are there. आप देख सकते हो सेल एंड होने वाला है. Today is the last date, so this is a good opportunity for you guys. You can have a look over the previous gate trackers, तो आपको results भी पता चल जाएंगे. एंड मेन बेनिफिट जो सुपर कोचिंग का है वो ये है कि आप अपनी पेस पे भी स्टडी कर सकते हो एंड यू कैन आल्सो फॉलो द स्केड्यूल एज वेल. वो दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो डिटेल सेशन है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है. जो आपके क्वेरीज, डाउट्स और क्विक रिवीजन होगी दैट विल बी इन द लाइव सेशन. क्विक रिवीजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीजें ऊपर ऊपर से उड़ जाएंगी. इट सिंपली मीन्स दैट कि हम जब कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, यूजुअली वी टेक 3, 4, 5 examples, depends on the complexity of the topic. But in the quick revision session, for each concept, I'll be taking one example, one or two maximum. Okay, अगर complex है, then 2 examples, because we expect कि आप already recorded session देख चुके हो, और recorded sessions बहुत सारे. I'm not going through the whole list. You can see a lot of options are available. So I'm not going through all. I'm just going to the full course. Under the full course, you will be getting a full course by Gate Forum, by Digimento, by Nimbus Learning, and by me and my team, that is the Testbook team. So under this, we have 250 videos जिनमें English language use होगी, यानी कि हिंदी और English दोनों स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होंगे, जिनको हिंदी और इंग्लिश मतलब कोई स्पेसिफिक चॉइस है. And under this, you will get the recorded sessions related to each and every concept from every subject. And apart from that, you will be getting here the live series schedule. Soon it will be updated because abhi batch start हुआ है. So definitely students are watching the recorded sessions, but it will get updated. Mock test series will also be included. आपको अलग से टेस्ट बुक या टेस्ट बुक प्रो पास लेने की जरूरत नहीं है. Everything will be included. Study notes.
हर सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी नोट्स मिलेंगे। ओके, ये डिटेल्ड नोट्स होते हैं, यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल कोई टॉपिक है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी एक्सप्लेन्ड in detail with the help of the examples, and that complete information will be available in the form of the PDF. अभी ये पीडीएफ फाइल्स लॉक्ड है, मैं इसको ओपन करके आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बट डेफिनेटली इट्स कवरिंग द कंप्लीट सिलेबस, एंड फॉर्मुला नोट्स ओनली कंटेन्स द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने आपको नोट करके बताया कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और ये फॉर्मूला है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सो this way from each subject for every topic it will be there under the formula notes। आप देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही पीडीएफ है, वो क्विक रिवीजन की होती है, जब आपका एग्जाम पास में आ गया तो उस टाइम पे यू कैन फॉलो इट। ओके, similarly notes will also be available for the general aptitude and engineering mathematics as well, तो कोई भी पोर्शन आपका छूटेगा नहीं। now if I go to the pricing, we have various plans like 1 year plan। 1 year means 9 plus 3 months। अभी ये 3 months हट जाएगा जैसे ही आपके पास it will sale will be ended, तो सेल में 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, तो ये 3% हट जाएगा, तो 9 months के लिए कॉस्ट विल बी 8,999 से भी कम हो जाएगी और वैलिडिटी भी कम हो जाएगी। सो 9 plus 3 months, 12 plus 4 months, 24 plus 8 months, 36 plus 12 months, ये तो आपकी पूरी बीटेक के लिए हो गया। तो दिस विल बी बेनिफिशियल ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ही सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं एंड दे वांट टू कवर द होल थिंग, बट आई वोंट रिकमेंड टू गो फॉर दैट बिकॉज इट्स टू बिग। यू विल गेट बोर्ड, और जब बहुत ज्यादा टाइम होता है ना तो सीरियसली आप लोग पढ़ते भी नहीं हो, तो बेटर आइडिया इज फर्स्ट ईयर में गो फॉर 24 plus 8 months, तो बाय द टाइम यू विल बी राइटिंग द गेट एग्जाम तब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन होगी, कभी भी लाइव सेशन में आओ, फैकल्टी से अपने डाउट्स पूछो, right? And otherwise, I'll recommend you guys to go for 12 plus 4 months because 16 months are more than sufficient to prepare all the subjects of the GATE in detail. Okay, and if you are at the final year, you can also go for 1 year. So last two are the good options, and you are getting it for like just 9,000, and this is for 10,000 and 7,999। तो अगर दोनों में डिफरेंस देखते हो, 4 months का डिफरेंस आ रहा है और प्राइस में हार्डली 16, 1,700, 1,800 का डिफरेंस आ रहा है। सो आई रिकमेंड यू टू गो फॉर 12 plus 4 months, but if you are at the final year or you are a pass out, then 9 plus 3 months will be good for you guys. Okay, so just go to the apply coupon, and under the apply coupon you can use the coupon that is Shefali S. So this is all from my side. If you guys have any doubt or any query, you can ask. Otherwise, let me quickly go through the schedule that we are following for our live sessions, and then we'll end our discussion. So अगर आपकी कोई query है, you can write that in the chat section. Otherwise, we'll end. कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन। दिस वाज लेफ्ट आउट, ये छूट गया था इन द फर्स्ट सेशन, सो आई बी टेकिंग जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। PYQs आ चुके हैं एंड दिस विल बी कवर्ड इन टुमारो सेशन, दैट इज फ्राइडे। Do you guys have any doubt or query? Today is the last day for applying, last day for applying ISRO. Is there anyone who wants to write the ISRO paper but you have not filled out the form? अगर नहीं किया है, last day for applying ISRO. तो last day है, इसके बाद तो फिर मैं भी बोलना बंद कर दूंगी कि अप्लाई कर दो। एनी हाउ जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, लेट मी शेयर द स्केड्यूल। मंडे टू फ्राइडे daily we are having 2 sessions, one on the YouTube from 4 p.m. to 5 p.m. and 8 p.m. to 8:30 p.m. This is on the YouTube, and this is a masterclass.
Under the YouTube sessions, we are covering the concepts. Currently, algorithms is going on. इससे पहले मैंने DBMS के खत्म किए. After that, will be most probably starting with the digital or data structures of programming. Let's see which one will be following. Saturday and Sunday, I'm taking the sessions for ISRO people, PYQs on ISRO. ओके. मास्टर क्लास में भी हम लोग PYQs कर रहे हैं, बट ये जो PYQs हैं दीज आर फ्रॉम द गेट पेपर्स. जो सैटरडे संडे वाले PYQs हैं वो ISRO पेपर्स के ऊपर है. टाइमिंग फॉर द सेशन इज 7 p.m. to 8 p.m. Saturday and Sunday. This session is also on the YouTube. Okay, this is the structure that we are following. Anyone having any doubt or query? So recent जो इससे पहले पेपर हुआ था इसरो का, that was in January 2020, approximately 3.5 साल हो गए. तो we are about to finish, almost we have finished the questions from ISRO 2020. Most probably this Saturday will be starting with the questions from, I guess, 2019 में नहीं हुआ था. That was end of 19 and beginning of 20. So 18 में पेपर हुआ था. I'm taking the questions from ISRO 2018. So if you want to participate in this one, you can go through the paper of ISRO 2018. Okay. And one more thing is ISRO का जो syllabus है, that is pretty similar to the GATE syllabus. If you are not comfortable with the concepts, then you can join the super coaching for the same. And if you are comfortable, then I would recommend you to join the master classes. GATE वाले students ISRO वाली join कर लो, क्योंकि similar concepts मैं common topics के ही questions ले रही हूँ. Okay, like software engineering is also there in the ISRO. I'm not taking the sessions or questions from the software engineering. So जो भी questions कर रहे हैं, questions I'm taking the questions from like algorithms, data structures and programming, DBMS, computer networks, digital, theory of computation, compiler design, computer organization and architecture. तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो कि ये गेट में भी है और इसरो में भी है. अब आप पूछोगे मैम आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि इसरो वाले स्टूडेंट्स को गेट वाले के क्वेश्चन का बेनिफिट हो और गेट वालों को इसरो का बेनिफिट हो. तो इससे आपको बेसिकली होगा क्या कि आपकी मंडे से संडे मतलब वीक के हर दिन आपको कम से कम एक क्लास लाइव मिल रही है. ओके, so this is all what we are having right now. Guys, do you have any query? This is all from my side. I have discussed the structure as well. If there is no query, then I'll see you at 8 p.m. Okay, at 8 p.m. we will be solving the previous year questions. आज जो questions करेंगे that will be from sorting. Already we have covered the sorting techniques. PYQs on sorting will be covered in today's session. कल वाले session से हम greedy techniques से start करेंगे. Okay, I guess there is no query. So this is all from my side. Thank you so much, guys. God bless you. Take care. I'll see you at 8 p.m. Bye bye.